Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is Prime Minister. Prime Minister is the leader of majority political party in Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल हो जाए तो वो अपने एक लीडर को मुंतखब करते हैं. दे चूज़ देयर लीडर एंड वही जो लीडर होता है he or she becomes the prime minister. Article 75 of the constitution says that prime minister shall be appointed by the president. यानी प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट दिस डजंट मीन कि दैट प्रेसिडेंट को जो मर्जी लगे उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाए. जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा कि दैट प्रेसिडेंट कैनॉट यूज़ हिज और हर पावर्स बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ. प्रेसिडेंट जो भी पावर्स उसके पास हैं वो यूज़ करता है विद द कंसेंट विद द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. यानी जब ये तय होता है when it has been already decided that who will be the leader of the majority political party, then it is the president who invites him or her to become the prime minister. Now, the prime minister, one important point is that the prime minister can be from both houses of the parliament. यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है. यानी लोकसभा का मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली, और राज्यसभा का भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. एंड टिल नाउ 3 prime ministers of India have remained as they were members of the Rajya Sabha. Indira Gandhi in 1966, when she became the prime minister, at that time she was not the member of Lok Sabha but that of Rajya Sabha. Deve Gowda in 1996 and Dr. Manmohan Singh in 2004. Now, what are the powers of the Prime Minister of India? First of all, Prime Minister is regarded as the head of the government, and Prime Minister within the parliamentary form of government, first of all, Prime Minister remains most powerful personality, and same is the case within India as well. First of all, we say that it is the Prime Minister who recommends persons for appointment as ministers. यानी जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है देन ये प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है देन दैट हु विल बिकम द मिनिस्टर एंड हु विल नॉट. देन इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु एलोकेट्स एंड रिशफल्स पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर्स. यानी मिनिस्टर्स को जो पोर्टफोलियो देना है या किस टाइप का मिनिस्टर बनाना है, whether a minister of state, deputy minister और कैबिनेट मिनिस्टर, ये डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर. और फिर इनमें जो पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करना है, पोर्टफोलियोज जिसको हम कलमदान कहते हैं, यानी किस महकमे कौन सा महकमा किसको सौंपा जाए, इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. देन द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो रिशफल, कैन चेंज द पोर्टफोलियोज एज वेल. वी से दैट प्राइम मिनिस्टर गाइड्स, डायरेक्ट्स, controls and coordinates the activities of all ministers. यानी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, जो भी मिनिस्टर्स हैं, उन सब को जो प्राइम मिनिस्टर है वो गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को. देन ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स which are appointed by the president, then it is the prime minister who first of all advises the president that who shall be appointed as these officials, like Attorney General of India, Comptroller and Auditor General of India, members of
Union Public Service Commission. Then that means all the officials who are appointed by the president, they are appointed with the recommendation, with the advice of the President of India. Then जो प्राइम मिनिस्टर होता है, by virtue of his or her office, he or she remains the chairman of important institutions, organizations like Niti Aayog, National Development Council, National Integration Council, etc. यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है विद इन इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, यानी वी से एक्स ऑफिशियो, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स द चेयरमैन of important organizations like Niti Aayog, National Development Council, National Integration Council. As such, we can say that Prime Minister is the most powerful personality, most powerful official within Indian Constitution, or we can say within the parliamentary form of government. Then there are several intellectuals and political thinkers जिन्होंने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके बारे में, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है उस बारे में एनालिसिस की है, और वो एनालिसिस बहुत हद तक वी कैन से दैट आल्सो फिट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल. लॉर्ड मॉर्ले, a political expert, says about the Prime Minister of Britain, he says that Prime Minister is primus inter pares. That means Prime Minister is the first among equals. And he also says that Prime Minister is the keystone of the cabinet arc. Prime Minister जो है वो बुनियादी हैसियत रखता है within the parliamentary form of government, within the British parliamentary system. And same we can say is true about the Prime Minister in India as well. Then another expert, Jennings, he says that this is the analysis about the Prime Minister of Britain, but we say that same is the case with that of Indian Prime Minister as well. Jennings says that Prime Minister is rather a sun around which planets revolve. यानी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि सोलर सिस्टम में सूरज की होती है. सूरज के इर्द गिर्द तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं. एंड वी कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर जो है विद इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो भी एक सूरज की मानंद है, और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या तमाम जो गवर्नमेंट है, दैट रिवॉल्व अराउंड द प्राइम मिनिस्टर. Jennings also says that he is the keystone of the constitution and all roads in the constitution lead to the prime minister. All roads in the constitution leads to the prime minister. That means prime minister is the most important personality within the government and also within the constitution as well. Hope you may have understood this. Thank you. Wish you all the best.